best thing about this is kahin na kahin self-healing. You know, and India is known for self-healing. Whether it's Ayurveda, whether it's yoga, and the understanding of everything. And through science आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी में क्या lacking है और आप organically उसको कैसे ये कर सकते हो. Of course, एलोपैथी से थोड़ा दूर हटके. This is more diagnosis is important क्योंकि आप you can change your body because of that. And one of the most important things is biohacking में नहीं चलेगा अगर आप mentally strong हैं. So biohacking also teaches you to be mentally very very strong. So it's the power of the mind. डर सबसे बड़ा ये कि क्या होने वाला है, क्या होगा, मैं बीमार नहीं रहूँगा, मैं फेल होऊंगा, वो पास होऊंगा. ये जो डर हम बचपन से बच्चों को स्कूल में फेल होगा तो मैं मारूंगा, ये करोगे तो आई थिंक वहीं से शुरू होता है बायोहैकिंग. जब आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हो, इसीलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जब आप खुश हो आपकी हैकिंग परफेक्ट हो जाती है क्योंकि दिमाग यहाँ पर है, दिमाग यहाँ नहीं है. गट से पूरी हमारी ये सिस्टम चलता है. तो एंड प्रिवेंशन दैट्स व्हाई इफ इट इज इवन इफ इट्स बायोहैकिंग आप कुछ भी करो नहीं चलेगा अगर मेंटली आप डरे हुए या मेंटली आप स्ट्रेस हो, कोई बीमार हो. जैसे मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कोई बीमार हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ. तो आई हैव टू मेंटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि नहीं ये पार्ट एंड पार्सल लाइफ का है और बीमार होगा तो यू नो वी नीड. सो दोज आर द थिंग्स. बट इज बेसिकली जो हम आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द इन्वायरमेंट, हमारा बाहर का और अंदर का इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल चेंज लाने के लिए इसको बोलते हैं बायो हैकिंग. सिंपल तरीका है ये अपने आप पर काम करने का. दैट्स कॉल्ड बायो हैकिंग. राइट. सो जितना हम अंदर देख पाएंगे, जो हमने पहले भी बताया है कि वी हैव टू व्यू इनसाइड क्या प्रॉब्लम्स है हमारे एंड देन वर्क ऑन इट. दैट्स कॉल्ड बायो हैकिंग. डू इट योरसेल्फ. दूसरा कोई नहीं, हमें खुद करना है. दैट्स कॉल्ड बायो हैकिंग. I think a consistent lifestyle, you know, anything that the world believes gave them a high is something I didn't believe gave me a high. Whether it was alcohol, whether it was tobacco, whether it was aerated drinks or anything unhealthy. For me, everything was about me feeling good, preventive wellness, staying away from medicine, staying away from things and enjoying the simple things in life. Nature, sport, team sport, relationship, friendship. This is all biohacking. According to me, this is all biohacking and that's how it's coming back to you. कि अपने आप को सुधारो. जब हम बोलते हैं कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, उनके कंधे पे इतने बुक्स और शोल्डर्स पे इतने बुक्स मत डालो. दैट इज़ बायो हैकिंग अकॉर्डिंग टू मी. ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में बड़े हो और जब अपने एनवायरनमेंट और अपने दोस्तों के साथ और खुशियों के साथ बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं शुरुआत है बायो हैकिंग की. तो शुरुआत वहाँ से होती है. एनवायरनमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ऑफ कोर्स इसको अभी एक नया फॉर्म दिया गया है इंटरनल इश्यूज़ को समझने का. Science has got involved to tell you about it, right. How to improve it, how to detox your body. Right. I think biohacking अगर कहीं शुरू हुआ तो इंडिया में शुरू हुआ होगा. Wow, you know, very well said, very well put. योग हो, आयुर्वेद हो, हमारे religions हो, हमारा culture हो, हमारी diversity हो, it is India. India is the epicenter of anything and everything good, and biohacking is one of that. And I'm glad that
Lalit jumped into it, and I got an opportunity to jump in Right. with him. बेसिकली मैंने खुद करके देखा है. आई हैव जस्ट वर्कड ऑन माई सेल्फ सिंस लास्ट 5 years एंड आई हैव सीन दैट कि आई कैन रियली चेंज माई बायोलॉजी which is going to hamper in future because the things that कि situations तो आएगी, everything will come which will deteriorate our health. So on that part of it, I took a charge of myself and I thought कि let's create a platform for each and every person. किसी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, not necessary to any particular tribe, but then each and every person can look into inside there and change the biology. Yeah, and we have a plan for it. I'm excited that somebody's taken the lead. देखिए हमेशा होता है कि एक्टर करना सबको चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग. जब तक मैनेजमेंट सही नहीं हो और एक एक्सपर्ट उस चीज़ में नहीं हो, आप अपनी एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज उनको दे सकते हैं, लेकिन फिजिकली चलाना उनका काम है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू नो, जब मैं ललित से मिला, आई नो ललित फॉर अ लॉन्ग टाइम, और 5 साल से जब इस पे वो वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी जर्नी भी यही रही है. लोग आज बात कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, लेकिन आज साइंस के जुड़ने से it is proof that you can take care of your internal systems by just being yourself, by just doing the simple things, staying away from allopathy. तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुरुआत है. आई मीन आई वांट टू गेट इनटू इट, आई वांट टू डीप डाइव इनटू इट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा चाहा कि कुछ वापस दूँ. आई थिंक दिस health is something that I can give back. So the idea is कि ये एक क्लिनिक है, मैं मानता हूँ ये हमारी बायो हैकिंग की क्लिनिक है. बायो हैकिंग का एक सेंटर होगा और फिर बायो हैकिंग की एक डेस्टिनेशन होगी. मैंने कभी अपने प्लान्स के बारे में बात नहीं किया हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव पहले डिलीवर करते हैं, चली तो फिर बात करते हैं. लेकिन यहाँ our plans are ready. Probably the next one would be a 15,000-20,000 square feet setup. Wow. Because biohacking is not just about machines, it's about mental fitness, about creating the atmosphere, creating nature around you. क्योंकि जब वो डोपामिन बाहर निकलता है, खुशी की हैप्पी डोपामिन जो आपने सुबह कहा, उससे सब बदलाव आता है. Right. You know, मेरे लिए तो एक बच्चे को भी, अगर मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप ड्रिबलिंग सिखाओ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा. जो आप अभी ढूंढ रहे थे कि यार मैं समझता हूँ आप में ये नहीं है, लेकिन वहाँ से शुरू होता है. बच्चा बॉल ऐसे पकड़ लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस उतनी बढ़ती है, ना कि ढूंढता है बॉल के लिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए. एंड यू कैन बी अ बायो हैकर योरसेल्फ. तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज भी दिया जाएगा. सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमारे सेंटर्स में आएंगे, लेकिन through the medium of social media and everything, जो यहाँ नहीं भी आ सकते, they should gain for it. So there are big plans, and this is my ultimate dream कि एक 10-15 एकड़ का एक सेटअप हो जहाँ वो बायो हैकिंग सेंटर हो, जहाँ लोग जाके कुछ दिनों को लेके अपने आप को बदल सके. Biohacking is also an use of science and technology wherein we try to work on ourselves. Similarly, there's a science between me and Suniel sir. Science is God's willing to be together and create a platform for each and every person in India to experience these services. So that's the main science, the God's science, is that we both are together. That's very and without him, I don't think so I'll be able to achieve. But then he's got the motivation behind, he just pushed me every now I meet him and said कि क्या कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. So that's what we have been working on it since almost 3-4 years down the line, and today we are here sitting together on this platform and giving it to the public. I think वो कहीं ना कहीं मेंटल थकान है जी. मेंटली आप थके हुए हो इसीलिए आप, लेकिन अगर आप एक रूटीन डालोगे अपनी ज़िंदगी में, रूटीन कोई कुछ भी हो, आप ब्रश करते हो, सुबह उठ के नहाते ही हो, तो वैसे ही आप रूटीन डाल दीजिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है. एंड गेट इनटू अ स्पेस वेयर यू आर हैप्पी. आई मीन मैंने आई थिंक 8-10 साल पहले ही छोड़ दिया था कि यार फ्राइडे वाइडे आता रहेगा, इट्स नॉट वर्थ क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट. 100 फिल्में तो कर ली मैंने, 10 फिल्में करके लोग घर चले गए, मैं क्यों नाराज़ हूँ. एंड आई थिंक दैट मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चेंज्ड एवरीथिंग मी. कोई मुझे दुख पहुँचाता है तो मुझे पहले हफ्ते भर 10 दिन मुझे बहुत ख़राब लगता था. उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो 10 दिन का है, अगर मैं इस वक्त को कम कर दूँ फिर क्या होगा. कम होते गया,
और आज ऐसा वक्त है कि बुरा लगता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ ठीक है यार कल ख़त्म हो जाएगा, एंड ख़त्म होता ही है. तो आई थिंक वी नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, वरना साइंस या कुछ भी काम नहीं करेगा. You biohacked. Yeah, you biohack that mind of yours to tell him कि be there and focus on the good things. यार अगर मुझ में आप में मुझे अगर बुराइयाँ दिखाई देगी तो मैं अच्छाइयाँ कुछ लेकर ही नहीं जाऊँगा. तो लेकिन अगर अच्छाई दिखाई दे तो मुझे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है. एंड दैट्स हाउ गलतियाँ मुझसे बहुत हुई है. मेरे एज पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की होगी जो गलत होगा, लेकिन उस गलत से सीख कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ. एंड आई थिंक इफ़ आई कैन इम्पार्ट दैट नॉलेज टू पीपल कि बी हैप्पी, मेक फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इनटू फ्रेंड. इसलिए ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, वो एम्बियंस को देखना बहुत ज़रूरी है. वो 3 साल पैंडेमिक से जो अब हम गुजरे जी, तो कभी कभार तो ऐसे लगता था कि एक दूसरे की जान ले लेंगे घर में. यू नो, इट्स बिकॉज ऑफ द मोनोटनी. वो मोनोटनी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. Yeah, so the biohacker is a facility or a center or maybe a clinic as per what we have described here. So it's there a platform for each and everyone to come and experience the therapies, how to enhance our performance, how to enhance our cognitive health. दिमाग का जो हम सोचते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी नहीं है, सो वी एबल टू गिव यू द नेचुरल enhancement जो आपका cognitive health strong करेगा, and you able to bear the stress, bear the situations. That is where we work. We have the entire facilities wherein we have number of facilities and number of services जहाँ पे उनका हम ये उसके ऊपर हम ध्यान दे के so, ऐसा है. हम जो बेसिक हमारा जो टेस्ट होता है, बेसिक हम जो टेस्ट करेंगे उसके ऊपर हमारा विटामिन और मिनरल्स का टेस्ट होता है, हमारा डीएनए पे टेस्ट होता है, हमारा टेलीमोस पे टेस्ट होता है. ईच एंड एवरी हमारा परसेप्शन देखने का नज़रिया, जो बीमारी है, जो रिपोर्ट है, वो अलग से. इट्स नॉटिंग दैट कि हम जो नॉर्मल देखते हैं वैसा नहीं. हमारा बेसिक नॉर्मल से पे नहीं बात करते, हम अपने कैसे इन्हांस करना है, कैसे उसके ऊपर करना है, उस ऊपर बात करते हैं. एंड देन वी कम टू नो वेदर दिस इज टेक्नोलॉजी. बहुत सारा है हमारे पास जो हम खाली स्कैन करके देख सकते हैं आपका विदाउट इन्वेजिंग एनी पिन नीडल या कोई ब्लड, बिना चेक करके आपको बता सकते हैं कि क्या इश्यूज है आपके अंदर. वो भी सेलुलर लेवल पे देख के बता सकते हैं हम लोग. इट्स नथिंग दैट कि हमको आपसे ब्लड निकाल के लेके जाना है. हमारा खाली ये स्पिट रहेगा, हमारा खाली नॉन इन्वेजिव ऐसा स्कैनर रहेगा जहाँ पे वो देखेंगे और बता सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम क्या है. एंड देन वील रिप्लेनिश देयर, देन वी वर्क ऑन इट, एंड देन वी कैन what do you call that? It's called anti-aging basically, जो हम आपका रिवर्स करेंगे, रिवर्सल डिजीज जैसा कर सकते हैं. बहुत सारा हैंगओवर होता है, पीपल गो एंड पार्टी अराउंड, और यंगस्टर्स काफ़ी होते हैं. देन नेक्स्ट डे पे फिर उनका सर दर्द होता है, उनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है उनका है. सो फॉर दैट वी कम हियर, वी गेट देम हैंगओवर आईवी, जहाँ पे हम उनका डिटॉक्स करते हैं. जो अल्कोहल जो ब्लड में चलता रहता है, एंड विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, वी ट्राई टू डिटॉक्स दैट, वी ट्राई टू रिमूव दैट अल्कोहल फ्रॉम योर बॉडी एंड डिटॉक्स द थिंग अल्कोहल. I think once we have a hold on everything that we have here, the idea is to probably we're still seeing how we need to take it forward. We definitely are going to, whether it's going to be clinics all over or one epic biohacking center in the city, which would probably, we've already kind of identified the place. It's a 15,000-20,000 square feet place. And then the next step would be a destination, you know, where the dream is to have a biohacking center. Dream is to have a strip where, like a Vegas, it's not going to be about clubs and gambling joints, but it's going to be about areas of health, where probably people on weekends say, you know, let's go and pick up everything that we need on health there and also work on ourselves. So it's going to be, it's got to be a destination. It's a 5-year, 7-year plan, 5-year plan. But the bigger center very, very soon. Because it's about preventive wellness. We've been through one pandemic, and we want to make sure that if ever the next one hits, we are way ahead of the curve. You know, we can cure our own bodies. We can cure ourselves mentally, physically, and otherwise. Even from a science perspective, we are way ahead. And somewhere down the line, biohacking involves a lot of India also. So you see, it's about being happy. It's about
you breathing right, you understanding your ailments and working on it, whether it's through science or whether it's individually. Some people can afford, some people can't. Whether it's nutrition that'll cure it, or whether it's that mental space. What happens to the generation that comes next? For me, biohacking is also walking in a forest. People talk about grounding and walking bare feet. Our Rishi Munis and our gurus always did it. First it was called junk, dirt, Indians, sit on the ground, but everybody is following it. So the West has always picked up everything, presented it differently, yoga, hot yoga. अरे गर्मी में ही योगा होती है इंडिया में यार, कहाँ बर्फ पड़ती है सब जगह. So that's why I've always argued, I've always fought, and I've always held our own, and I've always placed ourselves ahead of anybody else. So whether it's healing through food or healing through spices, this is what biohacking is all about. The minute you have an idea of your ailment, you start working on it. It could be here, it could be at home, it could be anywhere. So we're there, and because Lalit is married to this cause. Sorry, but because Lalit is married to this, there's a lot of focus, and Satvik he is anyways. So he's God's child. It works brilliantly for me because there's a mindset that works, and for me depression is not about अरे यार ये पागल है यार. नहीं, it's about a chemical imbalance. It's about looking at somebody differently. If it's a drug addict, I would never say इसको जेल में डाल दो यार. मैं बोलूँगा work on him. हमारा बच्चा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है. Are we going to just dump someone, or are we going to start working on that child? So biohacking also involves being a great human being. Also means being compassionate about someone next to you. Because that dopamine from him might flow into him and he might start feeling better. I watch cricket, I watch a sport, I watch children playing. I feel good about it. I get my childhood back. That is what it is all about. So you writing a gratitude journal also is a biohacking basically. It's speaking something good about people, saying good about people, like how Suniel said. Seeing a good in a human being is biohacking. It's as simple as it. Clarity, especially from a skin perspective, ice and that dunk feels amazing. I mean, it's death when you begin, when you get into it, but the recovery is unbelievable. And the thing is, for me, more than treatments, I've always followed this routine. There is this term now called biohacking, which is very good. Biologically, you understand yourself, and and you're hacking all the ailments and working on it. So, like I said, this is a clinic that'll the science and you'll understand what is wrong with you. But the larger centers are centers where you can understand yourself better and heal yourself on your own. Like I said, I send you into a forest. If you ever go for a safari in the morning, when you're back from the safari, you're on a different high. What is that high? Has somebody injected anything into you? Nothing. It's just that you breathe better, you're thinking better. There's mind fog that is there, doesn't exist anymore. It's like yoga and sport and the adrenaline that you get when you exercise. That's it. And yes, every treatment is something that I want to go into. There are certain issues that when I checked, there are some impurities in my chemicals in my own bloodstream, and I've always believed that I've eaten right. It's not what I've eaten; it's where the produce has come from that probably is wrong, and we have no control over that. So it's just about understanding and improving and staying healthy. So first of all, we have IV therapy, wherein we will deliver the nutrients directly into your bloodstream wherever we find that there is any deficiency in vitamin or minerals or any such problems we have. We'll try to give the IV as per our reports, and then that is delivered immediately, and that's the instant result what we can see in few hours also. And thereafter we have compression therapies like हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बॉडी का, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं उसको. सो बेसिकली इट रिमूव्स द लिम्फ ड्रेनेज फ्रॉम आवर नोड्स, उनको डिटॉक्स कर लेते हैं. देन वी हैव HBOT जो हाइपोबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे है वी हैव
bed like, and you are in lay down in compressed environment. वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, and it goes into your plasma directly and give the results. It reaches to the each and every part of the body much faster as it's required whenever it is a problem. Then we have peptide therapy. So peptide is something जो अभी next generation treatment होगा science में. Is going to be a big one. जहाँ पे peptide will be working as a protein protein treatment है basically. We are giving protein into your body and it is going to heal. बहुत सारे operations हैं, surgery है जो बच सकती है उससे. We can regenerate this tissues, ligaments. बहुत सारा fast movement होता है. It's about 30 days treatment and you have a different overall totally अलग ही उसका result है. Then we have infrared ozone therapy जहाँ पे we able to burn 400 calories, we able to detox, हमारा detox जो भी virus, fungi, जो भी detox treatment हो जाता है. It's about 30 minutes session जहाँ पे we able to get that any metals जो भी है वो सब detox कर सकते हैं हम लोग. Then we have red light therapy जो ये बहुत अभी आज की तारीख में बहुत चल रहा है. Red light therapy is basically different type of red light, infrared lights होती है जो आपके स्किन में अंदर जाती है. It goes deep inside. Every light has a blue, green, red. Every light has a different nanometers का उनका strength है which goes deep inside your skin, stimulate the mitochondria and basically हमारा जो cellular treatment होता है इसके ऊपर it works on the roots, the cells जहाँ पे हमारे ये ATP जनरेट होती है. Then we have skin का glow होता है. Then we have a lot of pain relief things which is work through red light therapy. Then we have intravenous laser therapy जो red light therapy होती है. ऐसा सीधा direct हम आपके blood में flow में we are getting into that and we giving lights into, तो उसका healing is much more faster, बहुत ज़्यादा fast होता है उसके वजह से. So then we have a cryo thing which is we put yourself in आपको एक environment मतलब जो बर्फ़ का environment is about minus डिग्री होता है, इस ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे रखते हैं आपको जहाँ पे आपका ब्लड फ्रीज हो जाता है. एंड देन इट्स यू नो इट इज देयर फॉर द मोमेंट टू कम आउट. द उसका फ्लो जो है इतना फास्ट हो जाता है कि एनी पेन इन द बॉडी लाइक इट्स अ रिकवरी बेसिकली. इट्स वर्क एज अ रिकवरी फॉर पीपल और द एथलीट्स और एनी ऑफ द थिंग प्रॉब्लम वी हैव इज बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑल्सो. So there are multiple things which we work. We see we have a DNA test. We have a oligoscan. Basically, we scan something. So a lot of new invented items are there which we work on it, and then we have a different results. Overall, we can work on them.